Hi friends, welcome on Yourpedia, the most authentic and the only platform where you get detailed post-gate guidance and you get a lot of informations like where to play, how to prepare for interviews, everything till spot round end of July we help you. And now this video is related to CCMT. If you want to get admission in IIT, that is COAP rounds. If you want to get admission in other than IITs or IICs, then the rounds are of CCMT. Central counseling है ये. CCMT stands for centralized counseling for MTech admission is in NITs and so many other institutes. उसका अब detailed schedule आ गया है how you have to proceed forward. 2-3 things I would like to tell you before you go forward. Number 1, जितने आप लास्ट राउंड्स की तरफ चलते रहते हैं, you go towards the last rounds of COAP, CCMT, you get more opportunities. But the moment you go to the last rounds till spot rounds and all, you need to take risk of rejecting the things in the earlier rounds. That you should do only with the advice of your PDA mentors. If you discuss with them and they tell reject कर दो अगले round को चलो, then you can do that. Number 2, filling the CCMT really helps you to take the chance in COAP round. IITs के admission में COAP rounds 10 plus rounds होते हैं. If you want to reject something in COAP, the mentor is going to ask you आपने CCMT भरा है कि नहीं. ऐसा ना हो कि आपको कोई ऑप्शन ही ना मिले, तो उस रिस्क को हेजिमनी करने के लिए CCMT is used. There are some NITs, southern NITs, Trichy, Warangal, Surathkal, Calicut. They are very good, better than some of the new generation IITs. So CCMT you can try, you can fill CCMT. Placements are very good in these NITs, though fees is little more, but placements are very good. So you can make healthy combination of COAP, CCMT both. Another point I want to tell you is like many students when they fill the choice in the CCMT, so whatever choice you want from all these institutes, every year students make the mistake that they fill those choices at the top which they do not want eventually. But the moment you have given first choice something, if you get that choice, you will not get choices below that. Suppose आपने 100 चॉइस भर दी, तो 50 नंबर की चॉइस आपने भरी है, अगर आपको वो मिल गई तो 60 नंबर की चॉइस आपको नहीं मिलती. इसलिए filling the preference order is the most important thing in CCMT. Entire thing depends upon that. Please fill the preference order under the mentorship or guidance of expert teachers, mentors, because if you make mistake in that, your entire process goes haywire. So filling the preference order is very important. You think what you want and then accordingly you fill it up. प्रेफरेंस ऑर्डर भरना इंपॉर्टेंट है. दूसरा CCMT भर देना, वो आपको हेल्प करेगा COAP राउंड्स में रिस्क लेने के लिए. और तीसरा, इसका सारा डिटेल वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं जो चंद्रा सर बनाएंगे एंड डिटेल में यू कैन सी दिस. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट ऑनलाइन सारे का सारा स्टार्ट हो रहा है 14 मई से. आज से स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर दैट. रजिस्ट्रेशन 4 जून तक बेसिकली आपका लास्ट डेट है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट आपका लास्ट डेट ऑनलाइन का 4 जून को है, तो 14th मई को इट इज स्टार्टिंग, 4 जून को इट विल बी ओवर. एंड इफ देयर आर सम इश्यूज देन 6 जून लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग बाय कैंडिडेट्स, दैट इज अप टू दिस. ऑटोमेटिक लॉकिंग ऑफ सेव्ड चॉइसेस वो 6 जून को हो जाएगा. तो यू हैव टाइम टू थिंक एंड गिव योर चॉइस ऑन प्रेफरेंस ऑर्डर. तो फर्स्ट राउंड ऑफ अनाउंसमेंट विल बी 9th जून. आपका पहला रिजल्ट निकलेगा, क्या मिला क्या नहीं मिला, एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है, दैट इज 9th जून. एंड आफ्टर दैट जो आप सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको देनी है, इसके ऊपर फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू मेक डिटेल्ड वीडियोस. ऑलरेडी वीडियोस आर देयर, लास्ट ईयर्स डिटेल वीडियो बनेंगे भी. सो फर्स्ट राउंड आपका 9th जून को आपका निकलेगा एंड वी विल कीप ऑन कमिंग दैट व्हाट इज टू बी डन नाउ. सो एज ऑफ नाउ 14th May today, 14th May till 6th June, all you have to do is you have to fill the preference order. The most important thing is how to fill the preference order and submit it. After that 9th June ko you have to take decision whether to accept it, not to accept it. Then after that second round will be 21st June. We have to again see and decide what is to be done. After that it is 27th June, what is to be done, what not to be done, third round. And then payment of partial admission fees online by confirmation and everything, that is to be done by 2nd of July. So we'll keep on telling you how it is to be done. And spot rounds are something which are very very important. They are the real gold mines and opportunities, especially for those जिनका गेट स्कोर कम है. तो स्पॉट राउंड क्या होता है, कैसे होता है, उसका सारे का डिटेल में मैं आपको दोबारा से बताऊंगा एंड आई विल डिस्कस विद यू अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. सो वेकेंट सीट्स,
एंड स्पेशल राउंड्स आर समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पेशल राउंड्स आर सम, अगर आप स्पेशल राउंड तक जाते हैं, और देखो ये 11 जुलाई तक है, स्पेशल राउंड्स मीन्स सम रियली गुड सीट्स और नॉट सो गुड सीट्स अवेलेबल फॉर यू, जो किसी ने नहीं लिए हैं, and with very low gate score you can take it. Many times on Yourpedia you must have heard that very low gate score and very good opportunity, you know, that is possible in spot round and special rounds. But spot round, special round, you should not go without the guidance or, you know, help of expert mentors. So that is how it is to be done. So these all details this have already come now, and you know, special round 1, special round 2 is going till August 2nd, and these are some vacant seats which are there. Seat allotment round 1, so these all dates are already given to you friends. Physical reporting and all, everything is to be done. So August May session will start for you. Tentative schedule for spot rounds is also provided to you, that is the phase 3, and that is August 8 is the spot round, and this is the real opportunity for all the candidates जिनका बहुत ही कम gate score होगा, and they are looking for opportunities. And then August 8 is the, you know, fresh spot round, that is the next round allotment of the seat allotted for national spot round. तो उसके लिए 12 अगस्त तक आपको जो स्पॉट राउंड में मिलेगा सीट. सो देयर एंटायर शेड्यूल दे हैव गिवन एंड वी आर गोइंग टू कवर इट इन डिफरेंट फेजेस. तो फ्रेंड्स ये 3 फेज में, स्पॉट राउंड इज थर्ड फेज, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे. सो अभी हम फर्स्ट फेज में बात करेंगे, दैट इज 14 मई टू 6 ऑफ जून, फिलिंग द प्रेफरेंस ऑर्डर. एंड उसमें please keep one thing in mind, that even if you think your gate score is less, but whatever you want the best, forget about gate score, whatever you want the best, you fill that at number 1, number 2, number 2. Suppose your gate score is very less, you are not going to get computational data science in NIT Trichy, but fill it number 1. Maybe if you don't get it, you don't get it, then it goes to algorithm, goes to number 2, number 3, number 4. So preference order ऐसे भरना. उसके बाद जैसे जैसे सेकंड फेज चलेगा, Yourpedia mentors will keep on telling you how to proceed forward. ये hidden opportunities होती हैं. Keep listening to the mentors of Yourpedia and keep proceeding forward, but fill CCMT because that will help you to take the risk further, right? All the very best. Thank you.